Hello everyone, my name is Lakshika, and as you all know, I'm a 6 times recommended candidate. So far, I've never been screened out or conferenced out. So, this question of how I never got screened out has been asked by a lot of candidates to me, by a lot of my friends who are preparing, who have been preparing. So, this video is regarding my 5 pointers, my success rate of 100% getting screened in, and I will be telling you and sharing my views on that. Now, before I start this video or start to put forward my points, I would like you to watch this video until the end because only then it will really help you to get fruitful results into your screening. And secondly, as you all know, we have launched our screening course on this amazing Officers Mind platform, and it has been prepared none other than by 7 times recommended candidate Miss Bhavna Chaudhary, and who has put her all insights into it, all her expertise and experience into it, which is very essential for you to get screened, which will really help you to get screened in. हमें पता है कि 60 से 70% बच्चे पहले ही दिन बाहर हो जाते हैं, and it's very painful because there are many students and there are many candidates who are eligible to be officers but screen out हो जाते हैं. तो उसको उससे बचने के लिए एक हमने कोर्स तैयार करा है, and I think this is a must buy, very reasonable price. You can buy it on our official app and download it and purchase it there. Okay, now I'll share with you my secret of getting screened in always. Well, there is no secret. I've discussed it with many of my friends and my juniors who really wanted to get in, and they have gotten the success rate of getting screened in. So I will start with my 5 pointers, and the first point here is having grasp on OIR, that is on your reasoning abilities. Now believe me, for my every attempt in SSB, I have prepared equally. I worked hard equally on my OIR. I've never taken it for granted. I've never gone with this idea that yes, I know, I have done it, I have practiced it, I will be able to do that. I've made sure that I've given at least 5 to 6 days for its preparation. So please practice OIR. It's very essential to get OIR 1 or 2. Don't take it for granted. Don't think कि अगर हम OIR अच्छा नहीं करेंगे कोई बात नहीं, हम स्टोरी अच्छी बना देंगे. See, ऐसा कुछ नहीं होता है. Please work hard on your OIR and try to get 1 or 2. And it has been one of my favorite part of screening, where I know I can prepare it by myself. It is no luck, nothing. It's all your hard work. The second point is about good analysis of the picture. The best part of PP and DT is कि picture hazy है. जब picture hazy है, you can play with your imagination. You can form, you can have different themes in your mind, and you can organize it accordingly and frame a good story. सो गुड एनालिसिस ऑफ पिक्चर करिए. वहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं पिक्चर देखने के लिए. उस 30 सेकेंड का पूरा इस्तेमाल करिए उस पिक्चर के कैरेक्टर्स को नोट करने में, अपनी स्टोरी बनाने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, और फिर उस स्टोरी को लिखिए. उसके बाद एनालिसिस तो आपने करा, इंस्ट्रक्शंस कौन देता है वहाँ पे? मे बी इट्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर और मे बी इट्स अ साइकोलॉजिस्ट. उन इंस्ट्रक्शंस को सुनिए. डोंट गो विद द प्री कंसीव नोशंस और कोचिंग्स. और I know you have practiced, you have rehearsed, you know what goes on there, you know the instructions, but if you listen to that person who is giving you instructions about how to write a story, you get in that frame. Okay, अब मुझे स्टोरी लिखनी है. You get in the frame कि अब मैं एक स्टोरी बनाने वाली हूँ या वाला हूँ. तो ठीक है, उस फ्रेम में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुनिए. मैंने हमेशा सुनी है, मैं कभी प्री कंसीव नोशंस के साथ नहीं गई. उसके बाद स्टोरी राइटिंग की बात आती है. राइट अ स्टोरी, ऑर्गेनाइज इट वेल, एंड हो सके तो एक ऐसी स्टोरी बनाइए विच शोज़ योर OLQs, like responsibility, like your confidence, like your leadership qualities, like you are a group person, adaptability. एक ऐसी स्टोरी बनाइए जो इन क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, उस स्टोरी को बनाने के, अगर उस स्टोरी को आप कंप्लीट नहीं भी कर पाए, डजेंट मैटर. जब आप नरेट करेंगे उसको, स्टोरी को वहाँ कंप्लीट कर दीजिए. कुछ ऐड करना है वहाँ ऐड कर दीजिए. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू देयर. उसके बाद हम बात करेंगे, स्टोरी राइटिंग हो गई. आपको पता है स्टोरी राइटिंग के बाद यू गेट अराउंड 30 minutes to 15 minutes फॉर preparing your story, or you're waiting outside for a turn for with your group, for group discussion. So उसमें क्या करना है, आपने स्टोरी को रिवाइज करना है, रिवाइंड करना है, जो लिखा है उसको याद करना है, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है. नरेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट of your SSB. So for getting screened in, your narration has to be confident,
it should be complete. You have to make sure that you are able to convey the idea of your story, main idea of the story, okay, and you are loud enough so that your assessors can hear you, okay. अब देखो नरेशन में मैं क्या करती थी, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माई स्टोरी. सबसे पहली बात, अपनी स्टोरी में विश्वास रखिए, ठीक है, कि वो आपने बनाई है और उसको ओन करिए. उसको ऐसे सोचिए कि ये मैंने बनाई है, मैंने ये काम किया एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो इट. एंड हाउ विल यू टेल इट? विद एक्साइटमेंट, विद कॉन्फिडेंस. तो उसके साथ जाइए एंड वहाँ पे अच्छे से इसको नरेट करिए कि ये दिस इज़ द स्टोरी आई हैव रिटन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. नरेशन के बाद आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, जिसमें सब कहते हैं फ़िश मार्केट बन गया, फ़िश मार्केट बन गया. मैंने 6 बार एसएसबी दिया है, मेरे में भी 6 बार फ़िश मार्केट बना है. एंड बिलीव मी, आई हैव ऑलवेज मैनेज टू गेट स्क्रीन इन. मैं 2 से 3 बार बोल पाती थी. एंड आई यूज्ड टू स्पीक इन अ मैनर विच इज़ कंस्ट्रक्टिव, विच हेल्प्स टू बिल्ड अ ग्रुप स्टोरी. अगर किसी की स्टोरी अच्छी लगी है उसको एक्नॉलेज करिए. अगर कोई बोल नहीं पाए उसको बोलने का मौका दीजिए. अगर आप बोल नहीं पाए, बी लाउड सो दैट assessors hear you. If your peer is not hearing you, at least assessors hear you, okay. And मूव द स्टोरी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. किसी का आइडिया पसंद आया है, उसके अराउंड स्टोरी बन रही है, तो बनाइए उसको. अपनी आइडिया को हमेशा आगे लाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एंड में स्टोरी नरेट नहीं भी कर पाए, इट्स ओके, गिव अदर्स चांस. एंड बैलेंस दैट लीडरशिप क्वालिटी इन यू, कि आप चांस भी दे पाए और खुद को भी ना दबाएं. तो यू हैव टू प्ले लाइक दैट इन योर ग्रुप डिस्कशन. याद रखिए, इट्स अ डिस्कशन, इट इज़ नॉट अ डिबेट. If somebody is making a debate, you can always calm the group down. You can say, ladies, it is a gentleman, it is a discussion, and let's not beat around the bush. Let's move to a constructive story and build a common story. And that's it. That's what you have to do there. If you are acting there as if you are building this in a constructive manner, definitely the assessors will note you. They will make sure you get screened in. So these are certain points which I discussed with you regarding screening, and I hope they are helpful. This is what I always used to do, and I have always made sure that they get me screened in. And confidence is the key, I'll always say. Hard work is the key, I always say. So please don't take it as a हुआ क्या हो गया. प्लीज़ स्टैटिस्टिक्स को मत सुनिए, इतने बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, इतना हो जाता है. आप अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए. अगर 200 में से 50 बच्चे भी स्क्रीन इन हो रहे हैं तो 50 में आ सकते हैं. आप अकेले हैं और वो 50 हैं, तो आप आ सकते हैं, कुछ भी नहीं है. तो बस अपनी तैयारी करिए, बी कॉन्फिडेंट. एंड आई विल ऑलवेज से दिस इन अ स्टोरी, PPNDT हो चाहे टैट हो, ओन योर पिक्चर्स, be proud of your work, okay. And see you soon. I'll be coming up with more videos. Bye bye.